प्रेज द लॉर्ड। मसीह की जय। क्यों ना हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, we come to the throne of grace. I want to thank you, Master, for you are a good God and great I am. Your name to be exalted, your name to be glorified. Master, we want to thank you that you have chosen us and you have given us the life and life in abundance, and we have a relationship with you. Lord, we want to thank you for Aroha Ministry and also for this platform and for the viewers. Lord, I pray that you're going to touch the hearts and minds of people, that they will be connected and blessed with the word of God. In Jesus' name I pray. Amen. एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं। I bring greetings from Christchurch, New Zealand. I bring lots of love from Reddy family and also from Aroha Ministry. That is the ministry that belongs to me, and I am so grateful and thankful to each and every one. I want to extend the word of God and the love of Jesus Christ to each and every one. I believe that you're going to be learning something new today. Maybe you already know, but I just want to encourage that you will be blessed today with the word that God has given to me to share among us today. So my subject is that Christ alive in you. यीशु आप में जिंदा है, आपके अंदर में वो जीवित है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, we have a Christianity is not a religion. We must understand that Christianity is not a religion. वो एक संस्था नहीं है, लेकिन it is a relationship with God. I believe that people will understand anyone can have a relationship with the living God. And so I just want to share what God has said in His Word. I'm so blessed that you all are watching, and also I really want to thank God for many lives will be touched and blessed today as I will be praying for you at the end. The Bible says, 1 Corinthians chapter 6 verse 17, but he that is joined unto the Lord is one in spirit. Hindi Bible says, और जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. One in spirit. एक आत्मा हो जाता है. See, those are having fellowship with Christ. Those who call upon the name of the Lord Jesus Christ. Those who say, Lord Jesus, yes, I believe in you. They become one in the spirit. I really cannot emphasize this more than this. I am telling you. And I also want to share that many people believe that Christianity is a religion. Maybe most of the people has बहुत से लोग ये बोलते भी है कि हम लोग हम लोग कैथलिक है, हम लोग मैथडिस्ट है, all these other name tags. But once we believe in Jesus Christ, we are one in spirit. हम लोग एक आत्मा हो जाता है. एक आत्मा means that we are one in the spirit. आत्मा में हम जुड़ जाते हैं. रिलीजन क्या है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ. रिलीजन वो है जो लोग खुदा को ढूंढते हैं या उसको खुश करना चाहते हैं. But Christianity is having a relationship with Christ Jesus. Many people are mistaken by the two words, Christian and religion.
आई नो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ आप लोग थोड़ा थोड़ा करके समझ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो रिलीजन है, पीपल आर ट्राइंग टू प्लीज गॉड, दे आर ट्राइंग टू प्लीज गॉड, यानी परमेश्वर को खुश करने में लगा रहते हैं. But Christianity begins with something entirely different. It is a relationship. Christianity is divinity manifested in every fiber of your being. Christianity जो है वो जो divinity है, यानी ईश्वर जो है आत्मा में हो जाता है. We are actually control, yani we are led by the Spirit. Christianity is a relationship, having relationship with God. When Christ comes inside of us, we have a relationship with God. It manifests in our body. Amen. I just want to share something. Christianity is not trying to please God. Through human efforts, जो हम एफर्ट लगाते हैं परमेश्वर को खुश करने में, क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है. क्रिश्चियनिटी इज वॉकिंग विथ गॉड, टॉकिंग विथ गॉड, हैविंग फेलोशिप विथ गॉड. It is about Christ living in you. I just want to read another scripture, which is I have read one, and I will read from 2 Timothy 2 Timothy chapter 2 verse 15 में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखे हैं उसमें थमे रहो. Stay put. Stay put. Once you are learning the word of God, once you have this relationship with Jesus, stay put. Stay put, people. उसमें थमे रहो, थमे रहो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है. और दूसरी स्क्रिप्चर है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, हिंदी बाइबल से पढ़ूंगी, then I will read it from English Bible. It says, First John chapter 5 verse 11 and 12. It says, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है. This is a very powerful confession. It is very important for all of us to understand what the Word of God says. I'll read it in English. Verse 11 and 12, it says, and this is the testimony. Testimony यानी गवाह, गवाही. God has given us eternal life, and this life is in His Son. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया. God has given us eternal life, and this life is found in His Son. If you have the Son, you have the life. If you do not have the Son, you do not have life. This life is found in Jesus Christ. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है. I want to emphasize people, and I want to encourage to build your faith on the Lord Jesus Christ. This is I always write, this is a journey of faith. तो जो ये हमारा जो
जर्नी ऑफ फेथ है। इसमें हम छोटे छोटे बातों को सीखते हैं और हम विश्वास करते हैं यह वचन आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। रोमन्स 8:10 और 11 को हम देखते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 verses 10 and 11 it says, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि 8 to 10, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Those who are in the body physical जो है, हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं है। we don't belong to God। अगर हम इश्क को नहीं ग्रहण किया तो हम उसके जन नहीं हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। Because of the Spirit, we are alive today. I believe that we're going to learn as the body of Christ. Christianity is all about the risen Christ. जो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। He is alive and is seated at the right hand side of the Father and he has given us his spirit। जो पवित्र आत्मा को हमें दिया है वो हमें वास करता है। तो हम ये आपको उत्तेजित करते हैं कि आप यीशु में बनकर उसके वचनों को पालन करें। जब तक आपको ये सच्चाई पता नहीं चलता है, you cannot live a life full of Christ। जब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आता है who Jesus is and how he dwells in us and that we have a relationship with Jesus Christ or we have a relationship with God, तब तक हम लोग मसीहत के जीवन नहीं जी सकते हैं। आमीन। You will have a जैसे ओरिजिनल नहीं होता है ना, कॉपीराइट्स भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग ओरिजिनल रहे, हम लोग कॉपीराइट्स नहीं रहे। Imagine how glorious is the real thing. How wonderful is Jesus Christ who loves us, who came in this world। वो हमारे पापों के लिए मरा है। He died and he rose again, and I believe that we are going to serve the resurrected Christ that dwells in us। Christ in us is the hope of glory। वो आशा का महिमा है हमारे जिंदगी में, और मैं विश्वास करती हूँ इस आशा की महिमा को आप अपना जिंदगी बना ले, आप अपना चाहत को बना ले, आप अपने जो तिरछी मार्ग है उसको हम सुधार ले। लेकिन मैं आज विश्वास करती हूँ जितने लोग हमें आज देखेंगे, जितने लोग हमें बाद में जुड़ेंगे, मेरा प्रार्थना है कि आप सभी एक परमेश्वर से एक जीवित रिश्ता को बना ले। Hallelujah। I believe that you're going to be blessed and highly favored, and I believe that God is going to touch every life। We're not going to be a religious people, but we're going to have relationship with Christ। और हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से वो पवित्र है। आमीन। क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। Lord, I just want to thank you that for the revelation of Christianity as the life of the risen Christ in me. Christ in me makes me susceptible to failure, sickness, or death. Your word is alive in me, producing extraordinary results, and through me, many are brought into the knowledge of your truth।
Master, I want to thank you and I want to glorify your name. I want to thank you for every person that is going to watch this, oh God, and those who are going to surrender their hearts to Jesus, to have a relationship with the living Christ. Father, I just want to thank you for each and every one. May God bless them in fullness, in abundance, O God. And as they have a relationship with you, God, let them be highly favored, deeply loved, and let them live a life of victory. In Jesus' name I pray. And Lord, I also pray for each teachers, preachers, and also for those who are going to be standing in the gap through prayer. Lord, I pray that many hearts will come to understand. Lord, we bind and break loose the power of the enemy that is stopping people from believing in Jesus Christ. Lord, I release and I open, oh God, and I send the Holy Ghost fire, oh God, that people will be saved in Jesus' mighty name. They will have a relationship with the living Savior. Lord, I want to return to the glory that belongs to you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. हम सब ने बोला Amen. And I just want to speak blessing upon your lives. मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आशीषित होंगे और ये वचन आपके जीवन के लिए लाभदायक है. May God bless you. खुदा हाफिज. और परमेश्वर को आशीष अनुग्रह आपके जीवन में है. मैं कल फिर से 2 बजे मिलूंगी और दूसरी सब्जेक्ट को लेकर आऊंगी और परमेश्वर बहुतायत से मसीहत के जीवन आपके जिंदगी में ढेर सके. May God bless you all. Amen.